Namaste. Welcome back to my YouTube channel eEducator. In this video, we will discuss about standard 9 subject social science, chapter number 6 textbook exercise, chapter number 6 world after 1945. We will discuss about the textbook exercise, the world after 1945, world after the Second World War. What were the situations in the world was explained in this relation. So let us discuss the textbook exercise. It is a textbook exercise. So if you are new and in the channel or first time viewing these videos, and if you have not subscribed the channels, click on subscribe button to subscribe the channels and see the playlist. आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, बाकी बहुत सारे चैप्टर के वीडियो के एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज यहाँ पर अवेलेबल है स्टैंडर्ड 9 और 10 के। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सी द वीडियोस विच आर अपलोडेड। Okay, let's start discussions of this exercise, and while writing answer you make sure that you write the answer up point wise. जितने भी आंसर है 2 मार्क्स वाले आंसर, 3 मार्क्स वाले आंसर, 4 मार्क्स वाले आंसर, सभी को आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं, फेयर नोटबुक में भी, और जो आप एग्जाम के अंदर भी लिखते हो तो वहां पर भी आपको पॉइंट वाइज ही आंसर लिखने। राइट द आंसर्स इन द पॉइंट वाइज। ओके, पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको लिखना है हर एक आंसर पॉइंट वाइज के अंदर। 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का जो भी आंसर है, विल राइट देम इन अ पॉइंट वाइज। योर हैंड राइटिंग मस्ट बी नीड क्लीन लेजिबल हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग सही होना चाहिए, वी विल गेट अ मैक्सिमम मार्क्स। So let us discuss. Let's start the discussion of the exercise. Answer the following question. Number 1, that is given. Write about the United Nations and its aims. We need to write about the aims. Look at the United Nations forward, which was given in the textbooks. These are the aims of uh, United Nations. We need to few information about United Nations के बारे में लिखना है, उसके बारे में उसके aims लिखने हैं. The Second World War broke out in 1939 AD. 1939 Second World War broke out, we know very well. It was ended in 1945. So once again a need of efforts for the world peace is required. Like in 1914, again the 1914 First World War broke out. At the end of First World War, it was decided to establish international organizations to establish a peace over the world. So League of Nations was established in 1920 के अंदर League of Nations की शुरुआत हुई to make efforts to establish a peace over the world. But somehow League of Nations was failed to control these imperialist policies of world nations, and again the Second World War was broke out in 1939. Again those countries who was involved in the Second World War, they thought we need one of a strong international organizations which can establish a peace over the world. So that to establish a peace over the world, again it required there, and this resulted in the establishment of a United Nations. Again more strong one international organization was set up, which was known as a United Nations. Main purpose and aim to establish a world peace. Okay, world peace establish करने के लिए it was established. So United Nations was established on 24th October 1945. United Nations was founded. Now aims of United Nations. What are the aims of United Nations? Okay, aims of United Nations, number 1 is that to establish international peace. Okay, the main purpose to establish international peace and security. Okay, resolve every international dispute by a peaceful means. So main aim to establish international peace and securities, and whatever the problems occurs in the countries can be solved with a peaceful means. Okay, peacefully solve किया जाए, उसकी वजह से यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई. Second number, developing a friendly relations between the state and taking all appropriate steps to maintain the world peace. Okay, to develop the friendly relations, main purpose to develop the friendly relations between the nations, and that after development of a friendly relation develop over, so whatever the problems are there can be solved easily here. So taking all the appropriate steps to maintain the world peace. World peace के लिए जितने भी अच्छे स्टेप लिया जाए उसमें से एक था कि to establish a friendly relations between those countries.
Third number, economic, social and cultural problems should be solved with the intervention of United Nations. So with involvement of United Nations, whatever the countries who face the problems can be solved. So human rights as well as a basic freedom should be disseminated but distributed respective of a caste, language and gender of a religions that's been given to every country. Now this society acts as a central body for bringing harmony between the functions of the different nations. Okay. Societies, all the nations should work together to bring harmony, to bring a peace between okay, different nations. अलग अलग country है वो के बीच में peace establish करने के लिए these are the aims of United Nations. Second number, explain the meaning of the policy of a non-alignment. We need to write about a non-aligned policy. Okay. Now, some new nations adopted the policy of a not to align. Okay. After the Second World War, world almost divided into two parts. Cold War was begun between America and Russia. Some of the countries who supported America, some of the countries supported Russia. बहुत सारी कंट्री रशिया और अमेरिका के सपोर्ट किया था. There were the some of the nations who had not aligned whenever two power blocks were military blocks, अमेरिका और रशिया. अमेरिका और रशिया को बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, उनको सपोर्ट नहीं किया था. And they decided to they would maintain equal distance with both the blocks. They made an equal distance with both the blocks, both the power blocks. Which power block? Power block अमेरिका और रशिया से equal distance बनाकर रखेंगे. And these nations were identified as non-aligned nations. These nations, the nations who has made equal distance okay, from two power blocks, America and Russia, जो उन्होंने align नहीं किया, and these country came to be known as a non-aligned nations, and the foreign policy which followed by the country which came to be known as a non-aligned policy, not supporting any powerful nations, America and Russia. And almost country to got independence after that, Second World War के बाद 1945-47 के जो independent हुए African country or Asian country, these are included here. Write in brief about the consequences of a Cold War. What are the consequences of a Cold War? Okay. Now the World War II resulted into creation of America and Russia as a superpowers. World War II के resulted okay, World War II के बाद okay, Cold War की शुरुआत हुई to become a superpower. कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सुपर पावर बन पाए. Okay. इंग्लैंड फ्रांस का तो बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ था. जर्मनी वी कैन इमेजिन द डिस्ट्रक्शन वाज देयर. तो अमेरिका और रशिया के बीच में कंपटीशन हुआ टू एस्टैब्लिश अ सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड. So the superpower, and there was a basic change in the relations among the powerful nations of the world after the World War II. Now, so after there was a basic change which occurs between those nations, those powerful countries, America and the Soviet Union, who had once allied. So America and Soviet Union, the Second World War के अंदर दोनों साथ में थे. Both was allied nations, and they fought against the Nazi Germany, इटली के सामने, fascist इटली के सामने वो war किया था उन्होंने. And they become a rival power blocks of military powers after the Second World War. After the Second World War, those okay, America and Russia, Soviet Union, those who were together, fought against the Nazi Germany के सामने, fascist इटली के सामने वो fight किया था. वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. And after the war, the Soviet Union, Russia captured the eastern areas of Germany, other eastern countries like Austria, Albania, Hungary, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland, Romania, Bulgaria and Baltic state को उन्होंने capture किया था after the second world war. So during 1949, conducting a nuclear test, 1949 के अंदर Russia also become the country which is a nuclear power. अमेरिका ने 1945 के अंदर उसके पास एटॉमिक बॉम्ब आ गया था. वी नो हिरोशिमा नागासाकी पर उन्होंने यूज भी कर लिया था वो. So Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear power of America as only one nation 1949 तक जिसके पास न्यूक्लियर वेपन था. 1949 के अंदर रशिया के पास भी ये न्यूक्लियर वेपन उन्होंने बना लिए. So various incidents, both the superpower almost came into the conflict. Okay, बहुत सारे incidents ऐसे हुए एक दूसरे के सामने आ गए. ऐसा भी हो सकता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो तो न्यूक्लियर वेपन से हो. सिचुएशन हो गई थी कोल्ड वॉर के टाइम पर. Fourth number, explain the brief the disintegration of unifications of Germany. So we need to write about a disintegration of Germany and unification of Germany. We need to write both disintegration and unification of Germany. Now, disintegration of Germany, the defeated Germany was divided into the four administrative segments. Okay, the Germany who lost the first and second World War, and Germany was found responsible for the both
World War. So at the end of a Second World War, German again was divided into the four administrative segment. ऐसा ना हो कि जर्मनी फिर से पावरफुल हो जाए, फिर से वॉर करे. इसकी वजह से those were the allied nations. They were divided Germany into the four administrative segment. And okay, the victorious country after the war, which was over, administration which was carried by America, Britain and Russia, या फ्रांस एंड रशिया. these are the four सेगमेंट के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया ने जर्मनी को फोर सेगमेंट में डिवाइड कर दिया. इवन कैपिटल ऑफ जर्मनी जो बर्लिन था, दैट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द फोर पार्ट्स. अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एस्टेब्लिश अ फेडरल के. जर्मनी वाज डिवाइडेड अगेन, जो फोर पार्ट के अंदर था उसमें एक पार्ट के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस, और एक पार्ट जो कंट्रोल कर रहा था वो रशिया. ऑलमोस्ट जर्मनी को बाद में अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस तीनों यूनाइट हो गए और उन्होंने एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की शुरुआत हुई. फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की शुरुआत हुई वेस्टर्न जर्मनी के अंदर. वेस्टर्न जर्मनी, क्योंकि ईस्टर्न वाला जो पार्ट था जर्मनी का वो रशिया ने कैप्चर करके रखा था, तो वो सो फाइनली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दो पार्ट के अंदर जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया. एंड दिस वाज एडमिनिस्ट्रेटेड जॉइंट अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस. अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने वेस्टर्न जर्मनी को कैप्चर किया और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू किया. रशिया के ईस्टर्न अंडर द कंट्रोल, ईस्टर्न जर्मनी जो था वो रशिया के अंडर रहा. Now unification of Germany, how Germany was unified. Now till 1990, many important and far-fetching changes took place in international political owing many reasons. Cold War also among superpower also ended here. 1945 के बाद कोल्ड वॉर वॉज बिगिन बिटवीन अमेरिका एंड रशिया के बीच में शुरुआत हुई. जर्मनी के सेगमेंट्स हुए और बहुत सारे इंटरनेशनल चेंजेस हुए टिल 1990 तक के अंदर. और 1919 के अंदर ऐसा भी हुआ कि कोल्ड वॉर का भी एंड सुपर पावर जो था उसके अंदर कोल्ड वॉर की भी एंड हुआ. सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड. सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ ना कि अक्टूबर 3 1990. मतलब सोवियत यूनियन जो था उन्होंने जो जर्मनी कैप्चर किया था, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, बहुत सारे दूसरे कंट्री को कैप्चर किया था, उन्होंने धीरे धीरे उनको इंडिपेंडेंट दे दिया. सो इट वाज डिसइंटीग्रेटेड स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड 1919. एंड जर्मनी जो दो पार्ट थे, ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी. जो वेस्टर्न जर्मनी अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड जो कैप्चर कर लिया था, ये जो वेस्टर्न ईस्टर्न जर्मनी रशिया के पास था, वेस्टर्न जर्मनी जो था वो बोथ और यूनाइटेड, वो दोनों यूनाइटेड हो गए. एंड पीपल ब्रोक आउट द जर्मन वॉल, ओके, विच वाज सिंबल ऑफ अ जर्मन डिवीजन. बर्लिन के अंदर एक वॉल बनाया गया था जो ईस्ट जर्मनी वाले वेस्ट में ना जाए, उसकी वजह से. एंड वो जर्मन वॉल भी था, उसको भी ब्रोक आउट कर दिया. जर्मन वॉल विच वाज सिंबल ऑफ जर्मन डिवीजन का जो था, they also broke out the wall. After 1990, Germany has made tremendous efforts and the strongest economic nations in the world. So 1990, unified Germany. They made a tremendous efforts to become a strong economic nations in the last decades here. Now today, unified Germany has turned out of one of the strongest economic powers in the European. So in the European country, one of the powerful country माना जाता है Germany. Now, fifth one, discuss in a brief the relations between India and Russia. India and Russia relation. Soviet Union has helped India considerably in the established heavy and key industry. After the independence of India, Russia helped India to establish industries, key industries, जो important industry है वो establish करने के लिए रशिया ने बहुत सारी मदद की थी, फाइनेंशियल मदद किया था उन्होंने, देखा जाए तो. Now Soviet Union helped India economically as well as technically. Economically financial help भी उन्होंने provide किया था. टेक्नोलॉजी की जरूरत थी इंडस्ट्री बनाने के लिए, जो वह सब जगह पर उन्होंने रशिया ने मदद की थी. So Soviet Union has taken India's side in the issue of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू हुआ था 1947 में वॉर हुआ, जम्मू कश्मीर का जो अभी जो POK बोला जाता है, जो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के अंदर गया, ऑलवेज रशिया हैज ऑलवेज टेकन इन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इंडिया के पास होना चाहिए, और वीटो का यूज किया इंडिया के लिए उन्होंने. So Soviet Union has often exercised veto power in the United Nations Security Council to see the proposal of against India pertaining Jammu Kashmir issue should not be passed. So should not pass towards Pakistan की तरफ ना जाए, उसकी वजह से they have used the veto power for India. India के लिए veto power का उन्होंने use किया. So Russia and India has a very close and friendly relations. Presently also we had a good relation with Russia. Sixth number, rise sought not on the military blocks like NATO, NATO, CENTO, and Warsaw Pact.
So after the Second World War, European and other countries of the world joined with the power groups, and power was centralized between two poles that we know, the America and Russia. And to protect अमेरिका की, अमेरिका ने जो कंट्री को सपोर्ट किया था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया ने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी कंट्री ने रशिया को सपोर्ट किया था उनके कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अलग अलग मिलिट्री ग्रुप्स बनाए उन्होंने. So that between mistrust and distrust शुरुआत हुआ था, that between both of groups and military groups was formed. उस दोनों को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग मिलिट्री ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ. उसमें एक मिलिट्री ग्रुप है नाटो, led and inspired by the America and Western democratic countries on the North Atlantic Ocean established. NATO North Atlantic, okay, Ocean established military organization की शुरुआत हुई नाटो. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की जो अलग अलग नाटो नॉर्थ अटलांटिक वाले जो ओशंस वाले जो कंट्री थे, दे बिकम मेंबर्स इन दिस. Another military group were established, NATO, to protect southeastern countries from the attack of a Soviet Union. Southeastern country को protect करने के लिए अमेरिका ने, इंग्लैंड ने एक ग्रुप बनाया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन 1945, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1945 was established. Another military group, Central Asia Treaty Organization, was established in Middle Eastern countries under the leadership and inspiration of England. Later on, America also took over the leadership of Center. Military organization of Russia, Warsaw Pact. So against this military organization, Russia created a military organization is considered a Warsaw Pact, and these members of this organization as Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland, Romania, and okay, these are the Russia. These are the member group of Warsaw Pact. Question: to answer the following questions in a brief. Okay, answer: after the World War II, how did the conflict between power blocks cause the situation of a conflict? So though the World War II got over, it resulted into the creation of America and Russia. Two power nations जो World War II के बाद बने, super power while taking place of England and France. England and France powerful नहीं रहे because destruction took place in England and France के बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता, financially भी वो stable नहीं रहे थे. So in the war, England, France, Russia and America were together, but Russia administration policy created different. So जो second world war के अंदर था, England, France, Russia, America, all the countries fought against Germany, Italy के सामने उन्होंने fight किया था. But after the end of second world war, certain administration changes was took place in America and Russia के अंदर, so that those country which was allied that become a rival nation. America and England that was separated, different America, Russia, England, अलग अलग country का separate हुआ. A strong competitions between the two power, that is America and Russia, to establish a supremacy of the world did what began, and conflict and fighting was started between America and Russia. So the power was centralized between two, that is America and Russia, and at various incidents both the superpower almost came into conflict with one another, and it created situations of a third world war जैसी situation भी हुई थी. मतलब ऐसा हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो तो अमेरिका रशिया के बीच में हो, और समहाउ कोल्ड वॉर का एंड हुआ 1919 के अंदर. सेकंड नंबर, what were Pandit Jawaharlal Nehru's thought on policy of a non-aligned? So the promoter of a non-aligned policy, Jawaharlal Nehru, what he said on this non-aligned policy. So Nehru believed in the movement continues to see the role of itself. Continue means which movement? जो नॉन अलाइन मूवमेंट हो रही थी वो कंटिन्यूस हुआ, एंड इस व्यू द वर्ल्ड पुअरेस्ट नेशन रिमेन एक्सप्लॉइटेड. जनरली द पुअरेस्ट नेशन जो थे, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री, दे वर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड बाय द यूरोपियन कंट्री. अमेरिका, फ्रांस जो भी कंट्री थे, ठीक है, इवन इंग्लैंड जो थे, उसके एक्सप्लॉइट किया था, मार्जिनलाइज, and they become a poor, no longer by opposing a superpower, but rather the unipolar world. Okay, and they have not opposed a superpower nation, but they have not supported them because they are the poor. If they have supported America और रशिया को support करेंगे, so may possibilities है कोई war हो तो फिर चीज का नुकसान ही होने वाला था. So it's a Western hegemony thinking thoughts of Western countries and neo colonialisms, and the movement has really realigned this again here. So these nations which was in a new non-aligned policies become good for those development of nations.
Third number, what is nuclear non-proliferation treaty? Why India has not signed? What is a nuclear non-proliferation treaty? क्या था इंडिया ने वो साइन क्यों नहीं किया? Now, nuclear non-proliferation treaty and comprehensive test ban treaties was from nuclear proliferation. Proliferation मतलब नया न्यूक्लियर का के प्रोडक्शन नहीं करना है, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने हैं और न्यूक्लियर का टेस्ट भी नहीं करना है, उस टाइप की ट्रीटी साइन करने के लिए था। बिकॉज जो अमेरिका, रशिया, फ्रांस उसके बाद न्यूक्लियर वेपन आ गए थे, फिर से वो बोल रहे कि दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी। सो क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट हैज persisted that India should sign a nuclear proliferation. India should sign because अमेरिका के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे। वो जानता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन ना है, इसकी वजह से प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी वो साइन करवाना चाहते थे। Okay, but as thus both the treaties were harmful for the nation interest, हमारे अगर हम ट्रीटी साइन करते तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, so it is harmful for the countries. So India didn't sign these treaties as a nuclear proliferation treaty, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना और उसके जो टेस्ट है उसको बैन करने की ट्रीटी हमने साइन नहीं की थी। Armament and disarmament, armament increase of a weapon, disarmament reductions of a weapon. Okay, so to establish a dominance over the world, armament race was given high priority. Armament. So after the almost it began after the first World War के बाद की शुरुआत हुआ था production of a deadliest weapon. America had used atom bombs and the first times on two cities of Japan, namely Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki के अंदर उन्होंने एटम बम का यूज किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। So Soviet Union to prove its capacity of making atom bombs by conducting a nuclear test. So Soviet Union के बाद भी capacity थी कि they were able to conduct the nuclear test. उनके पास भी nuclear weapon आ गए। Apart from the nuclear weapons, there was the missiles. Superpowers have also developed the chemicals and biological weapons. बहुत सारे chemicals और biological weapons भी उन्होंने बनाए थे। Biological weapon में क्या होता है कि ज़्यादा chemicals वाले weapon वो फिजिकल डैमेज कम करता है ज़्यादातर लिविंग ऑर्गन ह्यूमन बींग्स है और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ज़्यादा करता है। वायरस है वो सब स्प्रेड करता है, बायोलॉजिकल वेपन के अंदर आ जाते हैं। एंड दिस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बायोलॉजिकल वेपन, दीज आर द मास डिस्ट्रक्शंस, मिसाइल्स एंड दीज आर यूज फॉर मास डिस्ट्रक्शन and can kill millions of people. These biological weapons can kill millions of people without damaging any materialistic material को property को नुकसान किए बिना 1,000 people, million people can kill together. So that kind of weapon also developed by those countries. So after Cuban crisis, America, Soviet Union and Britain agreed to maintaining a control over the nuclear control. Britain के क्यूबन क्राइसिस के बाद धीरे धीरे कोल्ड वॉर का एंड की शुरुआत हुई थी, तो उनके बाद जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, दे प्रोमिस टू stop the production of a more deadliest weapon. So this agreement is known as a partial nuclear test ban treaty. Agreement ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट अभी नहीं किया जाए, बहुत सारी कंट्री ने साइन नहीं किया था। So India has always welcomed the treaty, but it always supported of a disarmament because अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, उनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन थे और दूसरी कंट्री को ऐसा बोल रहा था कि यू साइन द ट्रीटीज ऑफ नॉट डूइंग अ प्रैक्टिस और नॉट डूइंग अ टेस्ट ऑफ अ ट्रीटी। सो इंडिया ऑलवेज अपोज्ड इट, हमने साइन नहीं किया था वो। एंड द वर्ल्ड will be always danger until the disarmament of a lethal weapon is not done. Disarmament, okay, lethal weapon, dangerous weapon है, तब तक सबको डर तो रहने वाला ही है। Okay. Now Cuban crisis. Now America declared the blockade of a communist Cuba. This happened during the Cold War, and which was on the southeast against Soviet Union censorship. Look at नाउ अमेरिका डिक्लेयर द ब्लॉकेड ऑफ क्यूबा के अंदर ब्लॉकेड किया उन्होंने, जो साउथ ईस्ट के अंदर आता है वहां पर। सोवियत यूनियन से इन द शिप लोडेड विद न्यूक्लियर मिसाइल इन द कैरेबियन सी के अंदर क्यूबा आया हुआ है। सो बोथ द सुपर पावर थ्रेटन ईच अदर टू यूज अ न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर मिसाइल का अमेरिका पास भी था, रशिया के पास भी था। दस वर्ल्ड वॉर्स ऑलमोस्ट इन द वर्ड्स ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। सब माना जाता है कि सिचुएशन में ऐसा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो न्यूक्लियर से हो।
And finally, leaders of America and Soviet Union had talked on the hotline for the first time. ये situation के अंदर अमेरिका का जो लीडर था और रशिया के लीडर ने बात की, communicate each other, and both the parties realized about the destruction of a nuclear weapon, and the Soviet Union decided to withdraw the ship. Soviet Union decided to withdraw the ship because they know what was the destruction of a nuclear weapon. Second World War के अंदर अमेरिका ने ऑलरेडी यूज किया था. So again, if they start a nuclear weapon, so may destruct, they know very well. So that उसकी वजह से they withdraw the ship. A war between them could be prevented. This entire episode, which considered as a Cuban crisis. And beginning of a communication, the beginning of a communication between two superpower, and this misunderstanding between them was clear, and it considered as an end of a Cold War. Continuously, beginning of end of a Cold War. Disintegration of a Soviet Union. Mikhail Gorbachev, the prime minister of a Soviet Union, and from socialist side से बना था वो 11th March 1989, and he had a liberal attitudes. He has a liberal attitudes, and Russia has progressed tremendously in the fields of science and technology during his tenure. So he followed the various two policies. Gorbachev adopted two policies, glasnost and perestroika, that is to make a economic freedoms and to have the social kind of a development. और उनकी ये दो policies उन्होंने बनाई थी. इस वे Gorbachev introduced economic and political reforms. Economic and political reforms इन्होंने ये two policy के थ्रू किए थे. सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट रूल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए, पॉलिटिकल रिफॉर्म, बहुत सारी कंट्री को उन्होंने इंडिपेंडेंस भी किए. So stronghold Communist Party of Soviet bureaucracy and Red Army started weakening with this disintegration of a Soviet Union. 1990 process of disintegration of a Soviet Union began towards the end of 15 states. जो जिसके ऊपर रशिया ने कैप्चर किया था 15 स्टेट के अंदर से 14 स्टेट बिकम इंडिपेंडेंस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन केम इनटू एन एंड. सब एंड हुआ तब 14 स्टेट को उन्होंने इंडिपेंडेंट किए थे. 14 डिफरेंट कंट्रीज बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रशियन पावर. Berlin blockade, some Cuban crisis also Berlin blockade. Germany was the main cause behind the both world wars. So that it faced a humiliations, defeated world war. We know there was a destructions in a second world war. Germany का बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ था second world war के अंदर. Humiliating, defeated in the second world war, and all its administrations and economic collapse completely उसकी political party थी, जितना भी administration था जर्मनी के अंदर totally collapse हो गया. economics भी जर्मनी का collapse हो गया. And there was not a single large party left in the whole Germany that could rule nation. इसके ऊपर कोई भी strong political party ऐसा भी कोई भी नहीं था. They can run the Germany very well. So therefore, the defeated Germany was divided into the four administrative segment. Four administrative segment के अंदर Germany को divide किया गया. Same, the two independent German state came into existence. The Western Germany and Eastern Germany. So Western Germany के अंदर जो तीन country था, so a four division हुआ था, अमेरिका, England and France and Russia. So three administrative segment थे, अमेरिका, England and France का, वो Western Germany के जाना गया, और जो ईस्टर्न जर्मनी था वो रशिया ने कैप्चर किया था, वो कम्युनिस्ट रूल वहां पर एस्टेब्लिश हुआ. So due to this capital, Berlin also divided into the four segment. बर्लिन को भी फोर सेगमेंट में डिवाइड किया गया था. Now as Germany's three western segments were united. जर्मनी के three western segments जो थे अमेरिका जो थे वो यूनाइट हो गया. एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स और बर्लिन ऑल्सो यूनाइट. बर्लिन के भी फोर सेगमेंट्स में थ्री सेगमेंट्स वो यूनाइट हो गए. Now it's in a reaction to the Soviet Union, in April 1948 declared a Berlin blockade, and this resulted into the tremendous tension between the Soviet Union and Western countries. जर्मनी जो दो पार्ट है, जर्मनी को दो पार्ट में, वेस्टर्न जर्मनी एंड ईस्टर्न जर्मनी. यहाँ पर रशिया रूल कर रहा था. दैट वर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, दे वर रूलिंग हियर. नाउ सेम द बर्लिन जो था उसका कैपिटल था वो भी फोर पार्ट में डिवाइड किया. उसमें से जो पार्ट था, एक पार्ट तो रशिया के अंदर था, दूसरा पार्ट जो था होगा अमेरिका उसके ऊपर कैंसिल हुआ कर रहा था. सो रशिया है क्या रशिया ने उनका ब्लॉकेट डिक्लेयर किया कि जो वेस्टर्न जर्मनी वाले हैं वो ईस्टर्न जर्मनी के अंदर ना आ पाए.
So resulted in tremendous tensions between Soviet Union and Western country, America and this nation. Later on, high 42 किलोमीटर wall separating Western and Eastern Berlin को separate करने के लिए एक बड़ा सा दीवार बनाया गया, सोवियत यूनियन ने बनाया 42 किलोमीटर लॉन्ग, तो वेस्टर्न वाला ईस्टर्न में ना आ पाए, ईस्टर्न वाला वेस्ट में ना जा पाए. Is considered a symbol of a Cold War and considered division of Germany. Now question 4, state the reasons for the following statement. Establishment of United Nations is a starting point of a new world. So we know very well United Nations was established to establish a peace over the world. 1945 में अंदर हुआ था after the Second World War. So pages of histories are full of innumerable wars fought in ancient India and in the world. And the League of Nations was formed with the purpose of establishing a permanent peace in the world, we know, and due to the certain limitation it failed in 1939. In 1939 world war second was block. League of Nations was failed and 1939 के अंदर second world war की शुरुआत हुई. Now a persuaded human being for peace, protections and independence. Look at again it persuaded जो second world war की शुरुआत हुई उससे साथ ही ऐसा लगा कि again strong international organization चाहिए जो शांति बनाए रखे, they can establish a peace all the world and stop the war, and resulted establishment of a United Nations, and United Nations charters conclude the dismissal of a war and constant urge of a peace. So charters or aims of United Nations जो बताता है कि to stop the war and to establish a peace over the world. Cuban crisis is considered as the beginning of end of a Cold War. So America declared the blockade of a Cuban crisis to communist Cuba, and which was on the southeast, and to defeat Cuba against a possible attack of America, the Soviet Union sent ship loaded with nuclear missiles in the Caribbean Sea. If वही सेम टू सेम आंसर है जो क्यूबन क्राइसिस के अंदर जो पहले डिस्कस हुआ था वही. Both the superpowers threatened each other to use nuclear weapons. Finally, leaders of America and Soviet Union had a talk on the hotline for the first time, and Soviet Union decided to withdraw the ship. America decided to curb the nuclear missile and aim towards Cuba. And it's beginning, it begins the communications between two superpower, America and Russia, and this entire considered Cuban crisis considered as the beginning of end of a Cold War. The communication which was began between two nations, America and Russia. So after the Cuban crisis के बाद हुआ था ये, so it considered as the end of a beginning of end of a Cold War. Okay, as an MCQ. Number 1 answer is displayed here. How does the Charter of United Nations begin? It began with a forward. Which of these event is considered as the beginning of a Cold War? Beginning of a Cold War, disintegration of Germany. Third number, which ideologies was followed by the countries coming under the leadership of Soviet Union? Okay, third is socialistic. Fourth number, who was a promoter of a non-aligned movement from India, the Pandit Jawaharlal Nehru. And fifth number, which policy played an important role in international policies? Is a non-aligned policy. Okay, these are the answer of. Okay, this is the exercise of lesson number 6. Hope you like these videos, and still if you have not subscribed a channel, click on subscribe button to subscribe a channel and see the playlist where you can find these videos. Some other chapters videos are already uploaded, and okay, बहुत सारे चैप्टर के वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो. So share with your friends, and if you have any queries, send me in the comments. Thank you.